Yeah, Assalamu alaikum to all the students. So in our last lecture, we started off with another component of the periodontium, that was the alveolar bone, and we discussed all the key points regarding its development, function, and all its different structural components. And today we will go on to study the final component of the periodontium, that is are the periodontal ligaments. And within this topic we will also cover the part of the gingiva that is included in the periodontium. So we started off with the introduction of this topic, in which we discuss what is the normal thickness of the periodontal ligaments that are surrounding the tooth structure, and it varies according to the age, where its thickness is about 0.21 in young adults, and it can decrease with age, and it is also affected if there is any sorts of inflammation or a disease in the periodontal ligaments. So next we come to the development of the periodontal ligaments. So before we move on to the development, uh, I would just like to remind you of one of the structure that originates during the tooth development. ठीक है, जब इनेमल और डेंटिन की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, जो आउटर एंड इनर इनेमल एपिथेलियम है, they are going to extend downwards from the both sides. ठीक है, and their extension develops into a sheet that is known as the Hartwig root sheet. So in this image you can see there is a an brown color की जो extension, and this is the Hartwig root sheath. ठीक है, इसके ऊपर आपको cells नजर आ रहे हैं, columnar cuboidal cells. अब रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, इस पिक्चर में समझने की यही चीज़ है कि इनके जो अंदर वाली साइड पे सेल्स हैं, ठीक है, जो कि आपको आई थिंक स्लाइटली डार्क पिंक कलर में जो नज़र आ रहे हैं, स्टार शेप, दीज आर द डेंटल पेपिला सेल्स फ्रॉम विच द डेंटिन एंड द पल्प आर गोइंग टू डेवलप. ठीक है, जब आप इस हर्टविग रूट शीट की आउटर साइड के ऊपर देखते हो तो यहाँ पे आपको हेमाटोक्सिलिन स्टेन्ड सेल्स नज़र आते हैं काफ़ी सारे. ठीक है, अब उसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक फॉलिकल सेल्स जो है उसने लेबल किए हुए. ठीक है, आउटर साइड पे, इनर साइड पे डेंटल पेपिला सेल्स हैं, आउटर साइड पे फॉलिकल सेल. अब यहाँ पे आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि क्लोज टू द हार्टविग रूट शीथ जो फॉलिकल सेल्स हैं उनको आप देखेंगे वो बड़ी क्लोजली प्लेस्ड हैं. ठीक है, उनके दरमियान स्पेसेस नहीं है. ठीक है, सो दीज जो डेंटल फॉलिकल सेल्स हैं उनको बेसिकली आप सब क्लासिफाई कर सकते हो इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, एक तो जो बिल्कुल एडजेसेंट टू द हार्टविग रूट शीथ हैं, जिनको आप फॉलिकल सेल्स कहते हैं. ठीक है, अब फॉलिकल सेल्स से थोड़ा बाहर वाली साइड पे आप आए, एक एरो हेड आपको नजर आ रहा है. ठीक है, जो कि बता रहा है कि जो फॉलिकल सेल्स के जो बाहर वाली साइड पे सेल्स पड़े हुए हैं, दे आर स्लाइडली वाइडली स्पेस्ड एज कंपेयर टू द सेल्स ऑन द इनर साइड. ठीक है, तो इन सेल्स को आप स्पेसिफिकली कहते हो द पेरीफॉलिकुलर सेल्स. ठीक है, these are basically the these are the part of the dental follicle cells, but just because of their arrangement they are subclassified also as the perifollicular cells. ठीक है, अब हमने पढ़ा था जो सेमेंटम की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है once there is a break in the Hartwig root sheath, और ये जो follicle cells हैं इनका contact होता है with the dental papilla cells. ठीक है, so basically ये जो follicle cells हैं they are responsible for the development of cementum, और इसी के जो ये जो adjacent cells पड़े हुए हैं, the perifollicular cells, these are basically responsible for the development of the periodontal ligaments. ठीक है, इसके एडजेसेंट आप देख लो कि वही एल्वियोलर बोन है जो कि डेवलप करेगी फ्रॉम द ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक है, सो
the all the cells that are present in this dental follicle region, ये आपको पता है कि these are the mesenchymal cells which have the ability to differentiate into further different types. So when we start up with the development of PDL, वहाँ पे आपकी बुक में वही चीज मेंशन की हुई है कि it is going to develop from the dental follicle cells. डेंटल फॉलिकल सेल्स में भी आपने याद रखना है स्पेसिफिकली जो सब क्लासीफाई उनको किया जाता है इनटू पेरीफॉलिकुलर एंड फॉलिकुलर सेल्स. उसमें जो पेरीफॉलिकुलर सेल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल स्पेसिफिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स. नाउ वी कम टू फर्दर डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट में आपको पता है सबसे पहले क्या होता है कि दे एज एनी अदर हार्ड और सॉफ्ट टिश्यू, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेंटल फॉलिकल सेल्स हैं और द पेरीफॉलिकुलर सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करेंगे, द कोलेजन टाइप 1. ठीक है, दैट इज बेसिकली द मेजर कंपोनेंट ऑफ द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स. ठीक है. So the mesenchymal cells present in the dental follicle region, they are going to secrete the collagen. ठीक है. और वो किस तरह से secrete करते हैं? First of all, this collagen is secreted around the cementum. ठीक है. और उसके बाद क्या होता है कि जो सीमेंटम के साइड के जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स हैं वो सीमेंटम के ऊपर डेवलप कर जाते हैं. ठीक है. तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेरियोडोंटल लिगामेंट दिस इज गोइंग टू डेवलप अराउंड द रूट ऑफ द सीमेंटम ऑफ द रूट. ठीक है. अब अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, ये एक रफ सी डायग्राम है. एक तरफ है ये रूट सीमेंटम, ठीक है, जिसको RC इसने लेबल किया हुआ. ये 3 डिफरेंट इमेज है. यू कैन फोकस द इमेज दैट इज लेबल्ड एज A. ठीक है. इसमें देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन ओपन स्पेस बिटवीन द डेवलपिंग सीमेंटम एंड आल्सो द एल्वियोलर बोन. ये RC जो है दिस इज द रूट कैनाल, or sorry, the root cementum. The PL is the space where the periodontal ligaments are going to develop. ये ABP जो है this is the alveolar bone proper. ठीक है. So first of all, the perifollicular cells or the mesenchymal cells in the perifollicular region, they are going to secrete the collagen around the cementum. ठीक है. और cementum में कहाँ secrete करते हैं? In the coronal section. ठीक है. coronal section से secrete होते हुए along the length of the root collagen secrete होती जाती है towards the apical aspect. ठीक है. इस तरह से जो एरो हेड है ये डायरेक्शन होती है जो collagen fibers secrete होते हैं from the mesenchymal cells that are present in the perifollicular region. ठीक है. And first of all they are going to develop along the root cementum. ठीक है. और उस वक्त आपने याद रखना है जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोलेजन सिक्रीट हो रही होती है along the length of the root that is parallel to the direction of root. ठीक है. क्योंकि अभी जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए. ठीक है. So once first of all the collagen fibers of PDL are secreted along the cementum, उसके बाद कहाँ पे secrete होंगे? They are going to secrete along the length of the alveolar bone proper. ठीक है. And once these collagen fibers are secreted, तो इस जो ओपन स्पेस होती है इसमें क्या होती है? connective tissue matrix होती है that is being secreted by the mesenchymal cells. ठीक है. तो जब एक तरफ ये collagen fibers secrete हो जाते हैं along the length of the cementum and along the length of the alveolar bone proper, फिर वहां से इनकी maturation होती है और फिर ये fibers extend करके आपस में meet कर जाते हैं also in the periodontal ligament space. ठीक है जी. तो ये आगे भी वही चीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू डेवलप अराउंड द सीमेंटम ऑफ द रूट. ठीक है. और इनकी डायरेक्शन क्या होती है? फाइबर्स आर फॉर्म्ड एंड डिपॉजिटेड फ्रॉम द सीमेंटो एनामल जंक्शन टू द रूट एपेक्स. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? देन द फॉलिकुलर सेल्स इन द अराउंड द alveolar bone,
they are going to secrete the collagen fibers along the bony socket. ठीक है, और जब ये एक दफ़ा कोलेजन फाइबर सिक्रीट हो जाते हैं उसके बाद these collagen fibers they mature into fiber bundle and then they occupy the periodontal ligament space. ठीक है, so the initial orientation of these fibers is parallel to the root surface. उसके बाद जो ये orientation है वो आपने देखा है it starts to get perpendicular. अब ये perpendicular कैसे होती है, इसकी जो ओरिएंटेशन है ना पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की, ये रिलेटेड होती है विद द टूथ इरप्शन. जैसे जैसे दांत इरप्ट होता जाता है उस तरह से ये पैरेलल के बजाय परपेंडिकुलर पोजीशन में आते चले जाते हैं. ठीक है, फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है. फाइनली द एल्वियोलर क्रस्ट इज पोजीशन नियर टू द एपेक्स एंड द एल्वियोलर क्रस्ट फाइबर्स आर ऑब्लिक. ठीक है, सो दिस इज हाउ द डेवलपमेंट लुक्स लाइक. ठीक है, जो लेफ्ट के ऊपर पिक्चर है इसमें आप देखेंगे जो ये सिर्फ इसकी जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की मैट्रिक्स है. ठीक है, मैच्योर फॉर्म में ये इस तरह से नजर आते हैं जो पिक्चर आपकी राइट साइड पे. ठीक है, इसमें ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि हेमाटोक्सिलिन स्टेन्ड है या ब्लूइश कलर के हैं, ये हैं एपिथेलियल रेस्ट सेल्स ऑफ मेलेसिस. ठीक है, सो इस तरह से ये एक हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस आपको नजर आता है. ठीक है, फाइनल इसका जो इमेज है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पोजिशनल चेंजेस होती हैं इन द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स. ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे रूट डेवलप हो रही होती है उसके साथ साथ ही पेरियोडोंटल लिगामेंट्स डेवलप होते हैं. ठीक है, इसका फर्स्ट इमेज देखो, अभी यहाँ पे रूट डेवलपमेंट नहीं हुई हुई. ठीक है, या इनिशिएट हो रही है, इसके साथ ही कुछ लिगामेंट्स भी जो हैं वो उनकी डेवलपमेंट साथ साथ हो रही है. ये ब्लैक कलर का एक एरो हेड है, ये बेसिकली एक पेरियोडोंटल लिगामेंट्स के ग्रुप को बता रहा है. ठीक है, तो इस वक्त आप देखें कि यहाँ पे जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की जो पोजीशन है वो किस तरह की है, दैट इज ऑब्लिक इन डायरेक्शन. ठीक है, इसमें आप देखें कि ये जो एल्वियोलर क्रस्ट है, ठीक है, बेसिकली द एज ऑफ द एल्वियोलर बोन, वो कहाँ पे है, इट इज अबव द सीमेंटो एनामल जंक्शन. ठीक है, क्योंकि दांत अभी पूरी तरह से इरप्ट नहीं हुआ. वंस दिस टूथ इज गोइंग टू इरप्ट, ठीक है, सेकंड स्टेज आप देखें यहाँ पे क्या है कि एल्वियोलर क्रस्ट जो है इट इज जस्ट एट द लेवल ऑफ द alveolar crust. ठीक है, but the ligaments are still in the oblique position. जब आप देखते हो कि almost more than 2/3 of the root is formed, उस वक्त आप इसकी पोजीशन को देखो कि जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स हैं they become in a, बजाय oblique के ये बिल्कुल एक they are in a parallel position to the root surface. ठीक है, and once the tooth has completely erupt, ये दोबारा से जो alveolar crust fibers हैं, ठीक है, ये कहाँ पे चले जाते हैं दोबारा से इन द oblique position. So this is how the orientation of these periodontal ligaments, it varies with the eruptive movement of the tooth. ठीक है, साथ साथ periodontal ligaments develop भी होंगे और इनकी position भी change होती रहती है. ठीक है, so this is how the periodontal ligaments are going to develop. First of all, the collagen fiber is going to be secreted around the cementum of the root. ठीक है, then around the alveolar bone, and then these deposited collagen fibers, they are just going to grow into the periodontal space, and this is, and then their position varies according to the eruption of the tooth. ठीक है, and next we come to the different fiber bundles that are present in the periodontal ligaments. Because all first, so this is the basic composition of all the periodontal fibers. They primarily consist of type 1, then is type 3, and finally is the type 12 collagen fiber. ठीक है, ये इनकी उसने शेप बताई हुई है, they resemble the sliced rope like structures. And then we come to their classification, in which we can see that
There are two types of periodontal fibers. Okay, one of them is a bundle that is running between the tooth and the bone. These are known as the principal fiber bundles. Okay, another type are the fibers that are running from the lamina propria of gums, and they are then attached to the tooth structure or the root of the tooth. उनको आप कहते हो gingival ligaments. So this is how you can define both these two types of fibers that are present in the around the root, in between the root and the alveolar bone, and then we will study the different types of it in detail. ये इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द प्रिंसिपल फाइबर बंडल्स, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि these are present in between the alveolar bone and the root of the tooth. So the first type of these uh, fibers is the alveolar crust group. ठीक है, अब इन सब जो टाइप्स हम पढ़ेंगे ना एक एक करके, इसमें आपने याद रखना है कि जो इनका जो नाम है हर फाइबर बंडल का, वो आपको इसकी ओरिजिन और इंसर्शन बताएगा. ठीक है, so if you focus on their name you will be easily be able to tell the origin and insertion of these fiber bundles, both in case of principal fibers and also in the gingival fiber ligaments. Okay, so first of all we will discuss the alveolar crust fibers, and where we see the origin and insertion of this is that your root, when it comes to the surface of the tooth, we see an attachment of these fibers on the cementum just below the cemento-enamel junction, and another attachment we can see that we can found on the rim of the alveolus. ठीक है, so where we find these types of fibers, ये इसका एक इमेज है. ठीक है, इसमें अगर आप फोकस करें जो नंबर 6 लेबल किया हुआ है ना, ठीक है, दिस इज द एल्वियोलर क्रस्ट फाइबर. ठीक है, अब इसकी आप दोनों अटैचमेंट देखो कि जो रूट सरफेस के साथ अटैचमेंट है दैट इज जस्ट बिलो द सीमेंटो इनेमल जंक्शन, और दूसरी जो इसकी अटैचमेंट है दैट इज ऑन द रिम ऑफ द एल्वियोलस और द एल्वियोलर क्रस्ट भी इसको कहते हैं. ये जो बेसिकली जो बोनी प्रोजेक्शन होती है ना जस्ट बिलो द गम्स, इसको आप कहते हो द एल्वियोलर क्रस्ट. ठीक है, so whenever you are asked about what are alveolar crust fibers, you can easily tell their attachment according to their name, that one of their attachment is just below the cemento enamel junction and the other one is on the alveolar crust. So this is how you have to remember the location of all the different types of these fiber bundles. ठीक है, next we come to another type of the principal fiber, that is the horizontal group. ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो कि इसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो किस तरह से होगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी. इट इज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल टू द root structure, or also you can say at right angle or perpendicular to the root structure. So where it is located, just apical to the alveolar crust group and right angle to the long axis of the tooth भी कह सकते हैं, और at perpendicular to the root surface भी कह सकते हैं. ठीक है, इसकी अगर आप अटैचमेंट देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी एक क्लियर लेबलिंग आपको दी हुई है. ठीक है, जस्ट बिलो द एल्वियोलर क्रस्ट फाइबर्स. ठीक है, and where they are attached in a horizontal position to the cementum of the root. Okay, so this is the orientation and the location of the horizontal group fibers. Okay, so next we come to the oblique group. So as we can remember from the name that their orientation is going to be in an oblique position. Another important point that we can see in the first line is that these are the most abundant fibers present in the periodontal ligaments around the root. So they are inserted in the coronal section of bone from the cementum in an
oblique direction. Okay. So in this image you can just see a group of fiber just below the horizontal group, and their is orientation is in an oblique fashion. So this is how the oblique fibers look like in between the bone and the root of the tooth. Thirdly, we come to the final type of principal fiber bundle, that is the interradicular group. So the first and the most important thing that you need to remember regarding these types is that they are always going to be present in the multi-rooted tooth, because these are present in the interradicular region, and that region is between the two adjacent root of the same teeth. Okay, so you can also see their attachment, that they are attached or they form the crust of the interradicular septum. So in this image you can see molar, and you can observe ligaments that are there in red color just between two roots of, this is basically the lower first molar. ठीक है, उसके mesial और distal root के दरमियान जो है, these are the interradicular fibers, and they are inserted where on the interradicular septum. The bone between in between these two roots is the interradicular bone. इसका जो highest point है उसको आप कहते हो the interradicular septum. ठीक है, and this is how they are attached to the tooth structure. So these are four or all the different types of principal fibers that we have studied. ठीक है, now there is another group of fibers that we can see that are known as the sharpest fibers. तो ये sharpest fibers क्या होते हैं? जब मैं आपको periodontal ligaments की डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, तो इसमें हमने देखा था कि एक ग्रुप जो collagen fibers का है, that is embedded in the cementum of the root, and another group of collagen fiber, they are embedded in the alveolar bone. ठीक है, सो ये जो embedded collagen fibers होते हैं ना, चाहे वो सीमेंटम में हो चाहे वो एल्वियोलर बोन में हो, ठीक है, these embedded portion of the collagen fibers, they are known as the sharpest fibers. ठीक है, so and then you can see some of the different types of the uh, features that are mentioned below, that it is completely mineralized in case of the primary cellular cementum. ठीक है, आपको बताया था कि जो primary acellular cementum होता है, that is more mineralized as compared to the cellular one. ठीक है, so all you need to remember is the location and the basic definition of these structures, that are the sharpest fibers. ठीक है, उसके अलावा जो फाइनल एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो कि इसका लास्ट पॉइंट है, दैट आपको मैंने ये बताया था कि जो एल्वियोलर बोन होती है, वो खास तौर पे जो एंटीरियर टीथ होते हैं, उसमें जो उसकी कॉर्टिकल प्लेट होती है, दैट इज़ वेरी थिन. ठीक है, तो थिन होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज नो हेवरियन सिस्टम और ओस्टियन प्रेजेंट इन दोज टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन्स. ठीक है, sharpest fiber in case of anterior teeth, they only pass through that cortical bone which has no Havarian system present in them. ठीक है, so there are these sharpest fibers, they are always going to be present embedded in the cementum, but in the bony section they are only embedded if there is no Havarian system present in the compact bone. So next we come to second type of periodontal fibers that are known as the gingival ligaments. ये एक इमेज आपको दिया हुआ है शार्पेस्ट फाइबर्स का. ठीक है, इसमें आप देखो कि उसने एक एरिया दिखाया हुआ है पेरियोडोंटल लिगामेंट्स का, सेंटर में दैट इज द पेरियोडोंटल स्पेस, द पेरियोडोंट जहाँ पे पेरियोडोंटल लिगामेंट्स डेवलप करते हैं. ऑन आइदर साइड यू कैन सी दीज फाइबर्स
they have thread-like extension into the cementum and also in the alveolar bone. तो ये जो embedded fibers होते हैं, these are basically known as the sharpest fibers. Next we come to another type of, or the second type of fiber bundle that we can see uh, around the tooths that are surrounding the tooth structure. So in case of, and these are of 5 different types. Okay, first of all we will go through the dentogingival group. Okay, so in case of gingival ligaments, the dentogingival group is the most prominent or the most numerous fibers present around the tooth. ठीक है, in case of principal fiber bundles हमने पढ़ा था कि oblique fibers are the most numerous fibers present, and in case of gingival ligaments we have the dentogingival group. ठीक है, now if we focus on the name we can also come to know the insertions of these ligaments, that they extend from the cervical cementum to the lamina propria of free and attached gingiva. अब ये लेमिना प्रोप्रिया क्या होती है कि ये जो गम्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना, दैट इज नोन एज द लेमिना प्रोप्रिया. ठीक है, ये इसका एक इमेज है, यहाँ पे आपको ज़्यादा इसकी बेहतर समझ आएगी. ठीक है, इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे तो blue color के fibers and that are labeled as the periodontal ligaments. Then you have the fibers that are similar to the color of the gums. ठीक है, उसको आप देख रहे हो कि they are extending from the root surface and they are extending towards the and attached towards the gums. ठीक है, और the inner layer of the gums. ये जो innermost layer है, irregular layer, this is the lamina propria. So this is how the dentogingival group is oriented around the tooth structure. Okay, so one of its end is attached to the root of the tooth, the other is attached to the lamina propria of the gingiva. Okay, next is the alveologingival group, and we can see its attachment that they originate from the bone of alveolar crust and they are attached to the lamina propria of free and attached gingiva. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि 2 टाइप्स इसने लेबल की हुई हैं ब्लू कलर की, एंड यू कैन सी वन ऑफ दीज ब्लू कलर्ड फाइबर पैरेलल टू द रूट. ठीक है, जो बिल्कुल एल्वियोलर क्रस्ट की टिप से ओरिजिनेट हो रहे हैं और गम्स के ऊपर अटैच हो रहे हैं. So these are the ligaments that are, or the fibers that are known as the alveolo-gingival fibers. You just have to remember their origin and insertions. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप इज द सर्कुलर ग्रुप. इसके नाम से आपने याद रखना है कि दीज आर द फाइबर्स दैट आर सराउंडिंग द टूथ और द नेक पोर्शन ऑफ द टूथ, जहाँ पे इसका सीमेंटो एनामल जंक्शन होता है. ठीक है, वहाँ पे इसने सराउंड किया होता है. सो इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फाइबर दैट फॉर्म्स अ बैंड अराउंड द neck of the tooth, and it also helps the free gingiva to remain bounded to the tooth structure. इसका आपने याद रखना है कि जब भी आप मीजियल डिस्टल एस्पेक्ट से इसको देखोगे ना, या तो सिर्फ आपको तब ये नज़र आएगा, या इसको ओक्लूजल एस्पेक्ट से अगर देखोगे, ठीक है, उस वक्त आपको ये नज़र आएंगे. यहाँ पे ये पिक्चर है इसकी, इसमें अगर आप देखें जो नंबर 3 पे इसने लेबल किए, ठीक है, या नंबर 1 पे जो इसने लेबल किए, ठीक है, these are the circular fibers that are surrounding each and every tooth, ठीक है, from its neck portion. This is how they look like from the occlusal aspect. ठीक है,
Next we come to another type of the gingival ligament that are the dentoperiosteal group. ठीक है. So focusing on the name, once again you will know where their origin and insertion is present. These fibers run apically from cementum over the outer cortical plate of alveolar bone. So if you focus on the name, one of the ends of these fibers is attached to the tooth or the root of the tooth, and another portion will be attached to the periosteal layer of cone. A periosteal layer आपको पता है, it is the outermost part of the compact bone. तो यहाँ पे अगर आप इसकी अटैचमेंट देखोगे तो वो इस तरह से होती है. ठीक है. फोकस ऑन द पिक्चर, ब्लू कलर के जो फाइबर्स हैं उनका एक एंड जो है दैट इज अटैच टू द बोन. दूसरा जो फाइबर है वो पूरी बोन सरफेस को कवर करके इसकी आउटर मोस्ट लेयर पे अटैच होता है. दैट इज नोन एज द पेरियोस्टियम. So this is how the dentoperiosteel group has its attachment uh, around the tooth. And then finally we come to the another image जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो सर्कुलर फाइबर्स हैं, अगर आप उस कोई भी एक दांत एक्सट्रैक्ट कर दो और इंटरडेंटल एरिया से अगर आप देखें तो इस तरह से आपको नजर आएंगे सर्कुलर फाइबर्स. ठीक है. बट you will only be able to see these dentogingival group in a circular orientation. ठीक है. बिकॉज आपको बताया था कि जो लिगामेंट्स होते हैं दे आर रोप लाइक. ऑब्वियसली जब आप एक एंड से इसको देखोगे तो आपको इसका दूसरा एंड विजिबल नहीं होता. ठीक है. सिमिलरली ये एक ऊपर दो पिक्चर्स दी हुई हैं. ठीक है. उसमें जो राइट वाली पिक्चर है उसमें उसने दिखाया हुआ है वो दांत को हम देख रहे हैं फ्रॉम द बकल एस्पेक्ट. तो बकल एस्पेक्ट से जब आप देखोगे तो जो सर्कुलर ग्रुप है वो आपको उसका एक एंड नजर आएगा. ठीक है. तो इस तरह से सर्कल में आपको अपीयर हो रहे हैं बिकॉज यू दिस इज नॉट यू कैन नॉट सी देम इन अ 3D इमेज. सो इसका सिर्फ आपको एक ही एंड नजर आएगा. सो दिस इज व्हाई देयर इज डिफरेंस when you see them these ligaments from different positions. ठीक है. ये दोनों पिक्चर्स आपके बुक में दी हुई. So next we come to the final type of the gingival ligaments, that is the transseptal fiber system. इसके नाम पे अगर आप फोकस करें तो the transseptal means that these actually provide the or keep the adjacent teeth intact from the interdental area. ठीक है. ये इसका इमेज है. इसमें अगर आप सेकंड इमेज में फोकस करो जो राइट साइड पे. ठीक है. इसमें आपको नजर आएगा हाउ द ट्रांससेप्टल फाइबर दे आर ओरिएंटेड. ठीक है. हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी फ्रॉम द बेस ऑफ द सीमेंटम टू द बेस ऑफ द junctional epithelium of the tooth over the alveolar crust. So you can see them just above the alveolar crust. ठीक है. And just below the junctional epithelium. Junctional part of the gingiva that is attached to the tooth structure just below the free gingiva. इसको आप कहते हो junctional epithelium. And this is how the transseptal fibers look like. ठीक है. लास्टली एक इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है जो कि आप बुक में पढ़ेंगे. उसने लिखा होगा एक वर्ड ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स. ठीक है. अब ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स क्या होता है? ऑर्थोडोंटिक्स आपको पता है कि इट्स अ प्रोसेस और अ ट्रीटमेंट दैट इज यूज्ड टू अलाइन द टीथ, दांतों को सीधा करने के लिए. ठीक है. अब इस केस में क्या होता है कि आपको दांतों के ऊपर एक स्पेसिफिक फोर्स लगानी पड़ती है ताकि वो एक खराब पोजीशन से हिल के एक ठीक पोजीशन में आ जाए. ठीक है. और वो एक स्पेसिफिक फोर्स होती है और स्पेसिफिक फोर्स को आपने एक मखसूस ड्यूरेशन के लिए लगाना होता है ताकि सिर्फ दांत उस पोजीशन में ही ना आ जाए बल्कि हमेशा के लिए उस पोजीशन को मेंटेन भी रखें.
ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स क्या होता है कि फर्ज करें यहाँ आपने एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया, दांत सीधे कर दिए, पेशेंट के दांत सीधे हो गए, आपने वायर शायर सारा कुछ रिमूव किया। उसके बाद क्या होता है कि कुछ अरसे बाद आप देखते हैं कि जो पेशेंट के दांत हैं वो दोबारा से उसी खराब पोजीशन में दोबारा वापस आ जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है? ये ट्रांसेप्टल फाइबर्स होते हैं। ट्रांसेप्टल फाइबर्स का ये होता है कि इनको इनकी अडेप्ट करवाने के लिए जो फोर्सेस चाहिए होती हैं दैट आर वेरी हाई एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ताकि ये अपनी आप को रीमॉडल कर लें। ठीक है, तो अगर तो ये अपने आप को उस ड्यूरेशन को और फोर्स को ज़्यादा देर मेंटेन कर लेते हैं, तो ये जो ट्रांसेप्टल फाइबर्स हैं ये अपने आप को रीमॉडल कर लेंगे और ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करते, सो दीज ट्रांसेप्टल फाइबर्स दे विल कम बैक इनटू देयर प्रीवियस पोजीशन, जिसकी वजह से ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स हो जाता है, यानी कि जो टीथ आपने मूव किए थे वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। सो दिस इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ट्रांसेप्टल fibers. Then we come to another small group of fibers that may be present in the periodontal ligaments or in their surrounding. ठीक है, जिनको कि आप इलास्टिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं? Basically you have three types, but only the oxytocin are the type of elastic fibers that are present around the periodontal ligaments. ये इलास्टिक फाइबर्स को आपने याद रखना है। दिस इज बेसिकली an elastin protein that is present in the extracellular matrix around these periodontal ligaments, और इसका फंक्शन क्या होता है? That it provides the stretching ability to the periodontal ligaments, and it can stretch these periodontal ligaments to about 2 times. ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन क्या होती है? न्यूमरस डेंस पैरेलल टू द जिंजिवल ग्रुप फाइबर्स। ठीक है, ये इसका इमेज है। यहाँ पे आप देखो ये पेरियोडोंटल लिगामेंट्स हैं, उसके साथ ये बड़े फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, द ऑक्सीटैलिन फाइबर्स दैट आर पैरेलल टू द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। ठीक है, जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की होती है आपको वो पता है कि वो फ्रॉम बोन टू सीमेंटम अटैचमेंट होती है। ये होते हैं बेसिकली इलास्टिन प्रोटीन्स और थ्रेड लाइक कोलेजन फाइबर्स दैट आर present randomly in the extracellular matrix around the periodontal ligaments. Then we come to the ground substance. ठीक है, very important or a very basic thing that is that you will study in most of the structures, that is ground substance. Ground substance basically क्या होता है कि जब किसी भी स्ट्रक्चर में से आप सेल और कोलेजन रिमूव कर देते हैं या कोलेजन फाइबर्स, तो उसमें पीछे क्या बच जाता है? सिर्फ सेल के इर्द गिर्द का और द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बच जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपको पता है प्रोटियोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जो कि बेसिकली एक एमॉर्फस जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसको आप कहते हो ग्राउंड सब्सटेंस। मजीद अगर इसको डिटेल आपने पढ़नी हो या समझनी हो तो वो आप चैप्टर 4 में देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का टॉपिक है ना, या extracellular matrix के components क्या हैं। ठीक है, so all the different types of macromolecules that are present in the extracellular matrix or the surrounding environment of the cell, उसको आप कहते हो ground substance। उसमें आपको पता है that is more gel like, उसमें water component भी ज़्यादा होता है, and then you can also see some amount of proteoglycans. Now in case of periodontal ligament, ग्राउंड सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो होता है ग्राउंड सब्सटेंस का, दैट इज द ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, एंड देन यू हैव द 70% ऑफ वाटर। अब ऐसा क्यों होता है इसका ग्राउंड सब्सटेंस ऐसा क्यों है? बिकॉज पेरियोडोंटल लिगामेंट्स एंड द पेरियोडोंशियम एज अ होल, इट हैज टू बियर वेरी heavy masticatory stresses,
तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए या उस लोड को बियर करने के लिए इसकी कॉम्पोजिशन इस तरह की होती है, so that it can bear any sort of stress or any sort of inflammation. Then we come to the different types of cells that you can see present around the periodontal ligaments. उसमें सबसे जो predominant cells होते हैं वो होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको बताई गई है उनकी मॉर्फोलॉजी किस तरह की होगी। लार्ज एक्सटेंसिव साइटोप्लाज्म एंड दे हैव अ गुड नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इससे आप इसके फंक्शन का अंदाजा लगा सकते हो कि द फाइब्रोब्लास्ट दे मस्ट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट function when it comes to providing adaptability or remodeling of the periodontal ligaments. Okay. Then you can also see in the third point that they have mentioned the orientation of these cells. So you can find these type of cells oriented along the length of the periodontal ligaments. ठीक है, exceptionally high rate of turnover of proteins. Obviously, why this is so, because these periodontal ligaments, these are under very high masticated stresses. उस लोड को bear करने के लिए, compensate करने के लिए, the cells in the surrounding of these ligaments have to be very active, and they have to rapidly produce the protein matrix and new periodontal ligaments over time in order to compensate the masticatory load. Then you can also see other different type of function, fibroblast contractility. Okay, all these are related to the different type of its functional demands. Okay, in response to changes in tension and compression. Okay, tension and compression भी तभी होता है जब there is any sort of inflammation or any sort of occlusal load to the tooth structure. Okay. Next, we come to another type of the cells that are present within the periodontal ligaments, that are the epithelial cells. आपको बताया था कि जो हर्टविग रूट शीथ होती है, जब ये सीमेंटम बन जाता है पूरी तरह से, तो the cells of these herdwig root sheath, they disintegrate and they remain in the periodontal ligament. And these remnants of the herdwig root sheath are known as the epithelial rest cells of molluscs. So this is how they look like, visible as a strand of cells close to the cementum in the histological section. And there are some studies that show that the remnants of the epithelial rest cells of molluscs, they have the potential to give rise to different type of cells of periodontium whenever there is a requirement, or any sort of stress, any sort of damage to the bone or cementum. So the epithelial rest cells of molluscs, they have the potential to differentiate into osteoblasts or cementoblasts, okay, where they provide compensation. Okay. Then we have another type of type of cells that are present in the PDL. These are the undifferentiated mesenchymal cells, important constituent of the periodontal ligaments, located in the perivascular region. क्या पेरिवेस्कुलर रीजन क्या होगा कि जो एक तो आपके पेरियोडोंटल लिगामेंट्स का रीजन है, ठीक है, फिर एक एरिया आता है जहाँ पे आपकी बोन से ब्लड और नर्व वेसल्स एक्सटेंड होके इन पीडीएल को सप्लाई करती हैं ब्लड, ठीक है। उस ब्लड सप्लाई वाले रीजन में ये अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। एक तो आपके फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना, जो एनी सॉर्ट्स ऑफ एडवर्स कंडीशन में जो है न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स हैं, ये जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि
old cells हैं, they are going to go under apoptosis, and that apoptosis is followed by formation of new cells. तो इस process में undifferentiated mesenchymal cells जो हैं वो क्या करेंगे, नई पीडीएल और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को लेकर लेते हैं. देन वी कम टू द ब्लड एंड नर्व सप्लाई. ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि जो नर्व सप्लाई है और द ब्लड सप्लाई ऑफ द PDL is going to be the same blood supply that is going to supply to the tooth structure. ठीक है, so in case of a maxillary teeth you have superior alveolar artery that is going to supply to the maxillary teeth, and then you have the inferior alveolar artery that is going to supply to the mandibular teeth. ठीक है, इसके आगे से further branches होती हैं. In case of maxillary teeth, superior anterior, superior middle and superior posterior artery होती है. ठीक है, इस तरह से वो different anterior और posterior teeth को supply करती हैं. In case of inferior alveolar nerve आपको पता है कि एक mental nerve होती है, एक incisive nerve होती है. ठीक है, so all these branches are involved in the blood supply of maxillary and mandibular teeth. उसके बाद आपको पता है कि देयर आर न्यूमरस पोर्स और परफोरेटेड रीजन इन द एल्वेओलर बोन. ठीक है, उसी में से ये सारी नर्व सप्लाई पास करके आती है इनटू द पीडियल स्पेस वेयर इट इज गोइंग टू सप्लाई टू द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स. एंड एज वी नो दैट दीज arteries enter the alveolus through the apical region, and then as they move in upward toward the root section, जितनी ज़्यादा स्पेस होती जाती है उतनी ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं ब्लड की वो उस रीजन को सप्लाई करती हैं. The gingival third of the ligaments is the region where there is the most frequent blood supply. और आपको पता है कि जो स्मॉल पोर्स से स्मॉल आर्टरीज निकलती हैं वो क्या करती हैं, दे इंक्रीज द आर्टीरियल सप्लाई टू द टूथ. उसका फ़ायदा क्या होता है, इतनी जो हाईली कॉम्प्लेक्स और हाईली वेस्कुलराइज्ड रीजन जब होगा तो उसमें क्या होता है कि जितनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है उतनी ज़्यादा वोंड हीलिंग जो है इस एरिया की, या उतनी ज़्यादा जो रीमॉडलिंग है वो तेज़ होती. सो दिस इज़ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द distribution pattern of the arteries around the PDL, because there are very small arteries and arterioles that are supplying blood to the periodontal ligaments. So any sort of wound healing or remodeling is going to have highly rich vascular supply, जिसकी वजह से rapid remodeling और wound healing possible होती. Then we come to the nerve supply. नर्व सप्लाई में दो चीज़ें आपने याद रखनी है. एक तो उसने नर्व की आपको एनाटॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन बताई होगी बुक में. अब वो एनाटॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन वही होती है कि एक जो नर्व है वो एपिकल पोर्शन से एंटर होती है टू सप्लाई द टूथ, और कहाँ से एंटर होती है, जो डिफरेंट परफोरेशन होती हैं एल्वेओलर बोन. ठीक है, तो ये बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है. दूसरा ये होता है कि ये जो नर्व है, हर नर्व ये जो एंटर हो रही है डिफरेंट एरिया से इनटू द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, हर एक की एक टर्मिनल एंडिंग होती है. ठीक है, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सेस. ठीक है, या डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ सेंसेशन इन द टूथ रीजन. जो भी आपको फीलिंग ऑफ पेन होती है या फीलिंग ऑफ मूवमेंट होती है इन द और फीलिंग ऑफ प्रेशर होती है, वो इन नर्व एंडिंग की वजह से होती है. So you have to remember these 4 types of nerve endings that are present in the periodontal region. ठीक है, free nerve ending, Ruffini corpuscles. These two are the most important. ठीक है, followed by the last two. ठीक है, इसमें आपने एक तो याद रखनी है उनकी लोकेशन
ओरिजिन से ज़्यादा आपने याद रखना है कि वेयर दीज नर्व एंडिंग आर लोकेटेड इन द रूट। ठीक है, देन यू हैव टू रिमेंबर देयर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। नोसिसेप्शन होता है पेन, मैकेनो रिसेप्शन जो है या मैकेनो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, फीलिंग ऑफ एनी सॉर्ट्स ऑफ प्रेशर टू द टूथ रीजन। सो दीज आर द नर्व एंडिंग जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशंस प्रोवाइड करती हैं टू द टूथ स्ट्रक्चर। फाइनली कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। सबसे पहला तो आपको पता ही है सपोर्टिंग फंक्शन है। ठीक है, ऑब्वियसली दांत के इर्द गिर्द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स हैं, दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द टूथ। शॉक और एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी, ये आपको बताया था कि जो हैवी फोर्सेस होती हैं दीज आर उनके साथ दैट दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्रिंसिपल फाइबर्स। ठीक है, बाकी जो लाइट फोर्सेस आती हैं टूथ के ऊपर वो होल्ड करती हैं द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। जो इसकी वेस्कुलर सप्लाई होती है उसके दरमियान जो भी फ्लूइड कंटेंट होता है दैट इज गोइंग टू डील विद द लाइट forces that are applied on the tooth surface. Then we have remodeling। ठीक है, ये भी आपको थ्रू आउट बताते रहे हैं कि किस तरह से रीमॉडलिंग जो है वो होती रहती है थ्रू द एक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। एनी सॉर्ट्स ऑफ हैवी फोर्सेस दैट इज गोइंग टू कॉज डैमेज और रिजॉर्प्शन। ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं और उस स्ट्रक्चर की रिमॉडलिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल डिमांड। देन वी हैव द सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन में ये होता है कि व्हेनेवर अ टूथ मूव्स फ्रॉम इट्स पोजीशन, ठीक है, या जब भी आप दांत को कभी भी टैप करो किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ या दांत को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो तो उसकी वजह से क्या होता है कि नीचे की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो डिस्टॉर्ट होती हैं या मूव करती हैं अपनी जगह से, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स डेवलप होता है। इवन जब आप एज अ डेंटिस्ट किसी पेशेंट के मुंह में काम कर रहे होते हो, किसी दांत के ऊपर कोई भी प्रेशर लगाते हो तो वो उसको फील होता है, वो इन नर्व एंडिंग्स की वजह से होती है। ठीक है, जिसकी वजह से सेंस ऑफ प्रेशर जो है आपको फील होता है। अब ये जो नर्व एंडिंग्स हैं वो बेसिकली कहाँ पे हैं, दीज आर प्रेजेंट एंड आर सप्लाइंग टू द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। ठीक है, तो any sorts of movement of pressure is felt by these periodontal ligaments और stimulus is passed to the receptors और फिर ये आपको रिस्पॉन्स रिसीव करता है आपका ब्रेन। देन ऑब्वियसली यू हैव द न्यूट्रिटिव फंक्शन। वो आपको पता है कि जो ब्लड सप्लाई है जितनी उतनी ज़्यादा इसको पेरियोडोंटल लिगामेंट्स को न्यूट्रिशन भी सप्लाई करेंगे इन द पीडियल एंड ऑल्सो अराउंड द alveolar bone। फाइनली वी हैव द अडेप्टिव फंक्शन। अडेप्टिव फंक्शन में वही है, अगर आपने जो फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी का अगर आपको पता है देन यू कैन मेंशन हाउ द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स आर इन्वॉल्वड इन द अडेप्टिव फंक्शन। यू कैन गो थ्रू दीज फीचर्स, ये हमने पहले भी पढ़े हैं। द फाइब्रोब्लास्ट दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी ऑफ हाई टर्नओवर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन टर्नओवर हाई होने की वजह से they can effectively remodel the thickness of the periodontal ligaments। नए periodontal ligaments प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और इनकी थिकनेस को अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल डिमांड चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, when these are going to contract they are going to secrete proteins that is going to help the in the remodeling of shape of the periodontal ligaments। So this is how the PDL fibers they respond to any sort of adaptation that is required। And then we have the final very important point that they can increase the width to about 50% depending upon the load that the occlusal cavity has to bear। So any question that you have regarding this topic you can ask me right now। This is the end of the periodontal ligament topic।
and in the next lecture we will start off with the tooth movements. So any question you have regarding the periodontal ligaments, you can ask. So there is a question regarding the location of the transseptal fibers. ये मैंने आपको एक इमेज इसका दिखाया था यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रांससेप्टल फाइबर्स की। ठीक है, फाइबर्स रन इन द interdentally from cementum to the base of junctional epithelium of one tooth over the alveolar crust। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये नजर कहाँ पे आएंगे? इन द इंटरडेंटल रीजन। इंटरडेंटल रीजन कौन सा होता है? इन बिटवीन द टू टीथ। ये अगर आप इमेज देखें राइट साइड पे, इसमें बिल्कुल लाइट शेड्स में ना जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, दो जो एडजेसेंट टीथ को अटैच कर रहे हैं, दीज आर द ट्रांससेप्टल फाइबर्स। ठीक है, और ये होता है कि तरह जस्ट बिलो द जंक्शनल एपिथेलियम। जंक्शनल एपिथेलियम होती है द अटैच जिंजवल मार्जिन जो है ना, ऊपर आप देखें देयर इज अ स्पेस जहाँ पे जिंजवा जो है दैट इज फ्री, से नीचे वाला जो है गम पोर्शन दैट इज अटैच्ड। इस अटैच पोर्शन को कहते हैं जंक्शनल एपिथेलियम। उसके नीचे आपको नजर आती है इनकी अटैचमेंट टू द tooth root of the tooth, and it is present just above the alveolar crust. So this is how the transseptal fibers look like, and this is where they are located. So you can go through this topic. हमारा अभी टाइम खत्म हो गया, so you can go through this topic in your book. And before I start the next lecture, you can ask me this question in the start of my next lecture, ठीक है? Because the time is ending up. Your next lecture is going to start. You can ask me any question regarding this topic either in the group or either at the start of my next lecture.